Hey everyone, this is Dr. Arjun and welcome back to my channel। तो आप सभी का मेरे चैनल इंडियन मार्केट वीकली अपडेट में स्वागत है। तो पहले नेक्स्ट वीक के एनालिसिस अपडेट से पहले लास्ट वीक हमने क्या एनालिसिस क्या अपडेट किया था उसके बारे में देखना जरूरी है। तो बिफोर गोइंग टू द वर्ल्ड मार्केट, सो लेट वी स्टार्ट इन इंडियन मार्केट में लास्ट वीक के लिए क्या प्रेडिक्ट किया था, क्या एनालिसिस किया था। As we have seen in the chart, last week we are a bearish or sideways mode in the Indian market, both Nifty, Bank Nifty, and SGX. So looking all together on this is Thursday and Friday is a huge selling का है pressure है, and then Wednesday and Tuesday was the buying little bit, and Monday is the selling. So overall we are in the selling mode in the Nifty and the Bank Nifty also. If you say the Bank Nifty, so looking all together we are in the selling mode. So और लास्ट वीक जब हमने एनालिसिस किया था तो वी आर इन द मोर एंड लेस लास्ट वीक जब हमने एनालिसिस किया था तो ये मोर एंड लेस हम जो थे सेलिंग में थे, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट कि वर्ल्ड मार्केट जो थी लास्ट वीक में, वर्ल्ड मार्केट में हमने सेलिंग का ही एक प्रेशर किया था। So before going to the candle, this is a weekly candle. So we fix this. This is candle exactly as we in the last week हमने last week के लिए बोला था Indian market and world market there should be selling or bearish selling or in the sideways mode. So exactly we perform in that way. Looking all market of the world are in the bearish or selling mode, including Indian market little bit sideways, and then finally on Thursday, Friday there is a bearishness in the Indian market also. So as I said many times, our market always follow the most of the time 90 to 80% time follow the world market. So we also before making new position, a fresh position in Indian market, we also have to look in the world market also what are the update we have in the world market. So बिफोर प्रोसीडिंग टू एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक, तो बिफोर उससे जाने से पहले मैं एक चीज बता दूं, हमें इवेंट के बारे में पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। तो सो राइट नाउ इफ आई लुकिंग द इवेंट इन द वर्ल्ड मार्केट फॉर द नेक्स्ट वीक, दिस ओनली we have event for the 3 days only. This is a Monday, Tuesday, and Wednesday we have event. And Monday we have the around Indian time, Indian 11 p.m. That's a European, that is a chairman का speech है, that will impact the market maybe not be. And second we have then Tuesday there is 6 p.m. US का data है जो consumer goods का, that will impact the market. And Wednesday at the 7 p.m. Indian time there is a Fed Powell speech है, फेड चेयरमैन का स्पीच, पावल का स्पीच है। दीज आर मेजर न्यूज इन दिस कमिंग वीक। स्टिल आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड कि नेक्स्ट वीक में कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज तो अभी तक नहीं दिख रही है, लेकिन स्टिल मार्केट इन द करेक्शन मोड और मार्केट इन द बेरिश मोड और इन द साइडवे मोड, नॉट इन द बुलिश मोड राइट दिस मोमेंट। बट exact this is only probability of the looking altogether. It can be sideways or it can be bullish, but possibility ज्यादा bearish or sideways की, not sell bearish or sideways की, not की bullish की। bullish can be possibility but it will depend on the 2 to 3 days next, but right now there is no any possibility. So अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक का एनालिसिस, नेक्स्ट वीक का अपडेट, नेक्स्ट वीक का रिव्यू क्या हो सकता है हमारे एज पर आवर चैनल, एज पर माय एनालिसिस क्या व्यू हो सकता है लुकिंग ऑल टुगेदर। So this week we are, and more or less we can say it is sideways market are, and bearish market for the next week also. Looking is Dow Jones. Looking at Dow Jones, it is a sell, bearish sell or sideways in the Dow Jones. Looking in together, this is in the Nasdaq again, sell or sideways Nasdaq. European market again, it is a sell or sideways. It can better we say it is sell in the European market or it's sideways also. It's not clear cut. And the Japanese and the sideways are in the sell mode. So all market in the world market, Japanese, European, Nasdaq, and Dow Jones in sell or sideways mode. And before proceeding, we also have to look in the Indian market. So हम इंडियन मार्केट का भी थोड़ा देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो दिस इज बेसिकली SGX निफ्टी, दैट इज डेली टाइम फ्रेम। अगेन आई सेड कि हमारे को बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था जो 18,900 800 के आसपास, तो वहीं से हम रिटर्न दोबारा वापस आ गए हैं। तो सो मेजर रेजिस्टेंस इज देयर, सो देयर इज नीड अ ह्यूज volume of buying in this area so that we can break the resistance. So अभी तो resistance हमने break नहीं किया, तो हम resistance से ही वापस आ रहे हैं। तो so this is again SGX Nifty in sell mode, or in more or less sell or in sideways mode, not in the bullish mode.
Bank Nifty again closing the time be again it is a seller sideway mode, and Nifty 50 again is exactly 20 moving average के exponential moving average के आसपास रुका हुआ है, लेकिन again we said sell or sideway mode. So all together world market from Dow Jones up to India Nifty, it is a sell or sideway, not it is a bullishness in the world market until unless कोई ऐसा event ना आ जाए. So for this, for next as a trader point of view, as a swing trading point of view, it is a sell on rise. It is not buy on dip, it is sell on rise till when next 3 to 4 days. So next 3 to 4 days we have clear idea about the, but possibility to come down market is more as compared to possibility to go up in the market. It will go up, there is a less possibility market will go up. So this view from the Indian market and this view from world market, I have to say about this only. And so come to the Indian aspect, as sector wise, last week we are the 3 out of 7 to 8 sector we are in the, we analyze in the wrong way, especially we are in the bullish in the energy, but we in the bearish in the energy last week. We are like मैं show कर देता हूँ आपको. Energy पे हम bullish थे last week. This is candle on we were bullish, but again we have this in sideway. Then again Thursday, Friday को हमें selling दिखा, तो more or less sideway थे और selling last Friday को दिखा. Again अगर मैं बात करूँ आपके साथ एक और FMCG के लिए, हम FMCG sector, yes this is FMCG sector. We FMCG sector हम sideway थे, लेकिन इसने एक bearishness show की है. FMCG we are more or less not in the right way. और एक और sector में bright नहीं थे, वो थे एक that was infra. Again we are infra in the more or less in the infra में हम more or less sideway थे, but again Thursday candle ने एक bearishness show की, तो more or less we are in more 70 to 80% aligned in the market. And so let's start the next week about the sector wise Indian market. तो sector wise हम बात करते हैं, तो come together, this is from pharma, start करते हैं pharma से. So pharma for me next week is sideway or is more or less sideway or may can be bullishness in the market. Metal for me, this is very crazy chart for this week. Next week, more or less sector in the seller sideway mode. There is no any sector which is strong bullishness in the market, but only just pharma sideway bullish. So metal will be, for me, metal will be sell or in sideway. For MIT again sell or sideway. This is a look at the chart. This sell and sideway. ऐसा क्यों हम बता रहे हैं sell and sideway? Because we are below moving average and we are in the bearish mode. And look at the RSI also lower side. Again auto again showing us huge correction in the auto because काफी देर से रैली चली थी, expecting थोड़ा correction मिलेगा. मतलब again this is sideway था, अब एक sell zone में start होता है, sell or sideway है. auto भी हमारा बैंक I said is sell or sideway. Realty for me that's for me जो रियल्टी है, रियल्टी जो मेरे लिए है, तो रियल्टी मोर लेस साइडवे हो सकता है और सेल हो सकता है. रियल्टी जो है साइडवे और सेल हो सकता है. एंड अगेन फिन सर्विसेज अगेन इट इज साइडवे और सेल हो सकती हैं. एनर्जी अगेन निफ्टी एनर्जी अगेन साइडवे और सेल हो सकती है. पीएसयू बैंक अगेन स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक ही ज्यादा मुझे प्रेशर सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है एज कम्पेयर टू ऑल सेक्टर. एंड एफएमसीजी अगेन सेल साइडवे और सेल हो सकता है. एंड इंफ्रा अगेन साइडवे और सेल हो सकता है. एंड सो समराइज कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए. तो वर्ल्ड मार्केट में कोई ऐसी न्यूज बेरिश न्यूज नहीं है अभी तक, लेकिन स्टिल मार्केट इन द करेक्शन मोड. So looking at your American market, European market, Japanese market, so all are market in the sell or sideway mode, not in the bullish mode in anywhere. But अगर हमें कहीं पोजीशन बुलिश लगे तो हम बुलिश क्रिएट कर सकते हैं, बट वर्ल्ड मार्केट अभी बुलिश नहीं लग रही है, साइडवे सेल और साइडवे लग रही है. तो सो और प्लान विल बी सेल ऑन राइज ओनली. एंड सो इंडियन मार्केट अगेन निफ्टी, बैंक निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी अगेन सेल और साइडवे ओनली मोड. And in sector wise, only one sector which can show the bullishness in the market or sideway, that is a pharma. Rest market are more or less sideway or sell. And 2 to 3 sector which are more selling pressure right now: metal, IT, auto. They have more pressure of sell as compared to sideway, but other sector are more or less sideway or sell. And one sector specifically PSU bank which can show pressure of the selling in the PSU sector. So ये हमारा व्यू है नेक्स्ट मार्केट के लिए, ये हमारा एनालिसिस है. सो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन ज्ञान होती होगी. हमने क्यों सेल बोला, क्यों राइज बोला. दिस इज नॉट द वन डे
वन डे का एक इसके पीछे व्यू है, दिस कंटिन्यूसली थ्रू इवॉल्विंग व्यू होता है, और इसमें एक दिन में नहीं हमने इसको लर्न किया है, इट विल टेक टाइम 3 to 4 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द मार्केट. सो मोर और लेस मार्केट अप एंड डाउन तो चलता रहता है. इट इज बेटर where we have to take position, where we have to exit. This is much more important. Risk management much more important. Mental psychology is much more important as compared to this is the market कितना ऊपर कितना नीचे गया है. सो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी. if आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने कोलीग के साथ, अपने फ्रेंड के साथ. सो more and people will join our channel so that we can put on more and more videos on investment, on trading, on other content also which is wealth related. So also important for all the things, have take care of your health. Specifically आज looking this, the weather is not good in the North Indian division, so take care of your health, which is much more important. Keep hydrated as much as possible, avoid more sun exposure outside, so stay inside the home, have good food, have fruits, have hydration, uh, also in the family, take care of the family, in the friend, in the family and the colleagues जो भी दिखते हैं. तो so take care of their all. If you are healthy, then you can this only if you are healthy in your life, only then you can bring all the things in the positive way. Otherwise there is no fun to get in this all the other stuff if your health is not good. So with this I will sign off from this Indian market weekly update. So I will catch you on the next week with next view for Indian market. Till then, take care. Bye bye.